Hello everyone. Yes, so we are live on 26th July 2023. So good afternoon. तो आज काफी मेमोरेबल डे है और काफी day है। तो वैसे ही आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। okay. So yes, Yeah, okay now. thank you. So yeah, so today I let me talk to you about 26th July 2000. आवाज Hello. just a sec. Yeah, okay now. Yes. So I will be talking about 26 July 2005. It's been 18 years. So 18 years ago, 900 people died on this particular day. More than 40,000 crores was lost. Bombay Stock Exchange was stopped for 2 days, which has never happened ever. Airport was also flooded. Airport runway was flooded, and 2 days it was shut. So on this day, so let me start this day with remembering those people. So I will just let's do a 1 minute silence for them. I'll just share my screen with candle, and let's. Share the screen. Yes. So thank you everyone for that. So today for also is Kargi Vijay Divas. So we have a special person online also on this for this day. So let me introduce you and him. So his name is Colonel Uni. In 1979, he joined the army from Officer Training Academy, Chennai. And then he was assigned to Assam Regiment. And he served the army for 31 years in the army, retired in 2010. He took part in the Operation Kargil War 1990, 3rd May, and then also took part in anti-militancy operations as part of the Rashtriya Rifles. So, Colonelji, if you can come online. Yeah.
and give us few words and your experience. Can't see you. Please turn your video. Good evening. Jai Hind. Sorry for the interruption. Call had come. Just cut it off. So today is the 26th July 2020. Exactly 24 years back on this day, we recaptured the post which had been taken over by Pakistan troops on the LOC in Jammu and Kashmir. As you know, if you see the geography of Kashmir, the mountain ranges run from east to west. And on the hilltop, we have a post all along. And the spur which comes down from the mountains towards India are very sharp. They are as good as straight cliffs. Whereas towards POK side, the spurs are gradual. So what happens in Kashmir is during the winter months, in the thick of winter, certain posts on the LOC are vacated by the Indian troops because it becomes untenable to stay in those places. Snowfall is very, very heavy. There's a lot of wind blowing, due to which temperatures goes beyond -40 also. And even the area is such that not more than 8-10 people can stay at a time. So every winter, somewhere near January, February, this post used to be withdrawn and then reoccupied again once the snowfall becomes light and the tracks, roads are open. So similarly, certain posts along the border were vacated by us in January somewhere in 1999, but these areas were continuously patrolled. So on 3rd July 1999, when a patrol was moving towards the sector called Batalik sector, they noticed some intrusion has happened there. In fact, Captain Kalia from Indian Army, along with 5 men who were going on patrol, were captured by the Pakistanis on that day, and they were made prisoners, they were tortured. Ultimately, their bodies were handed over after 1 month. So that is when we came to know that certain posts have been occupied by the Pakistan Army. So immediately we went into war mode. At that time, I was posted in a place called Bareilly. I was in a divisional headquarters in Bareilly. As soon as the warning order was given, we were told to move from Bareilly to Kashmir. So we were about 10,000 soldiers who had to move to Kashmir. So in 2 batches we moved. When a division or a group moves to any war location, we have 3 groups which move. One is called as a recce group, another is called as a order group, and third is the fighting group. Here, because things were happening fast, the recce and order group, that is basically the commanders at all levels, were taken on aircraft directly to Srinagar airport, and from there they moved towards the forward area to carry out reconnaissance, because when 10,000 troops are moving, to place them at various places is also a big challenge. So they had to choose the various places where the various battalions, units, up to 1,000 men would be located. Then the division moved in 2 groups, one from Bareilly towards Manali, then on to Leh, and then from there to Kargil, whereas the second group moved from Pathankot, Jammu, Srinagar, then on to Sonabag, Dras. So 3rd July, initially, because of terrain, we were unable to capture many of the posts.
That is when we realized that the troops are well entrenched there, and just attacking, going by climbing the hill and attacking will not do. We need to have support of artillery guns as well as air force. That is when the Bofors guns were introduced into the valley, inducted there. They took their positions and they started then bombarding the various posts on the line of control. Once and thereafter, even the Air Force came in, Air Force started firing the missiles onto this post, onto the bunkers which had been made by the militants there. As you are aware, in the total nearly 80 days of battle which took place, over 527 soldiers were martyred and over 1,300 were injured. So after so much of sacrifice, we ultimately managed to either kill those people who were there on the top, or those who were balance left were made to pull back by the Pakistan Prime Minister then due to the pressure from the United States of America. So this war was fought on a high altitude area where heights were from 15,000 to 18,000 square feet above mean sea level. So the oxygen is also rare here, high altitude. So you also have breathing problem here. And in case troops which come from the valley, from the plains come and fight there, a lot of people have problem with breathing. Because the heights was so much, the troops had to walk all the way, climb the complete mountain and ensure that they reach the top before first light. That is the only way they could reach and fight with the people who are up, or soldiers who are up on top, and kill them. So ultimately we managed and we won the battle, but at a pretty heavy cost. In the battle, young officers of the rank of captain and major showed their leadership, and they are the ones who actually won the battle for India. There are 4 Paramveer Chakras awarded during the battle, 10 Mahavir Chakra, 49 Veer Chakras, and 150 Sena Medal Gallantry. So this was overall what happened in the Kargil war. Is that fine? You want something more to be told? No, very good, very good. Thank you. Yeah, that's very that experience, the story you have shared. I guess it touched a lot of hearts, and it's a very powerful story. So, what did you do? Just give an update. What have you been doing since you have been retired in Mumbai? Yeah. Sorry. After I retired from the army in 2010, thereafter we have a Ayyappa temple in Bangur Nagar. So I started visiting the temple pretty often, more or less daily. And I came in contact with the managing committee there. They wanted me to come into the managing committee. So I joined there as a trustee and as a managing committee member. So I've been working there since then in the temple till now. Then I had the opportunity to meet someone who was carrying on a project of going to schools and colleges and making students aware of the need to save water. It was called as Walk for Water. It was a CSR project by a company in Hyderabad. So 1 year I went around schools and colleges in Mumbai, giving them pledge to save water and telling them how they can save water at home. That is where I came in contact with Mumbai March, and I joined the Mumbai March. And since then I have been with them, initially with River March and thereafter Mumbai March, and I've been working with them as a volunteer till now.
we've been working, as everybody knows, for the 4 rivers of Mumbai, the rejuvenation of Mumbai River. It is carrying on. We were pretty lucky to have various people joining us, like Amrita Fadnavis joining us, and then being able to meet the Chief Minister and the Commissioner. And if you know, at present, rejuvenation in the form of beautification of the rivers is happening. Besides that, I also go for tree plantation, I go for beach cleaning. Such activities I have been pretty active in. Thank you. Very good, very good. Yeah, thank you. Yeah, we have great pleasure working with you, Colonel Uni, and we have been empowered by his leadership in the army, also in our Mumbai March team. And thank you so much. And once again, thank you for joining on Kargil Vijay Divas. And I guess you have a busy day, a lot more programs during the day. Thank you for taking your time, especially on this important day and on such a short notice. Thank you. So now I will take your leave, and Karanji, thank you for joining. Now I will continue the program with, let me start with a video one of our friends, senior journalist, shared by my friend Arun. He connected us, and she is in Mussoorie, Uttarakhand, and she has shared her insights on what's happening there. As we've seen in the past few weeks, Himachal, then we've seen few weeks ago Junagadh. Now we are in Mumbai. So also we're seeing a lot of issues. Yesterday, hill collapsed in Mahakali, and I don't know. So Andheri subway is always flooded. We're still in 26 July 2023, even after 18 years. We're talking the same thing. So let me share some insights for her. She's a senior journalist, and she's a lot into environmental issues, and she will share the current conditions. So yes, so let me just share her. My name is Tanya Kalibakshi. I live in Mussoorie. Just a second. Namaskar. My name is Tanya Kalibakshi. I live in Mussoorie. And well, as I say, mountains are forever, but one look around me, especially in monsoons, it scares me. The way we are tampering with the youngest mountain range in the world is worrisome. Come monsoons, and we hill folks are always on an edge. Disaster has become synonymous with the rains. Dramatic visuals from Himachal Pradesh, Uttarakhand speak for themselves. Cars being swept away, there are logs which have come down, in rivers in spate. There's power cuts, water pipes burst, telephone lines snap, and there are unending queues of cars and people stranded on the road due to landslips and landslides. The state government is burrowing tunnels after tunnels, the roads are being widened, and a green cover is constantly under threat because of unplanned projects and hydro projects, widening of roads. There's no end to it. And these mountains need us, and maybe another Chipko Andolan is what is required to save what is left of our home in the hills. We have Joshimath that is sinking. There are parts of Badrinath which are kind of, fragile. And these are fragile mountains. We cannot tamper with them.
there has to be a balance, has to be struck, some kind of a balance between progress, development, keeping this green gold, the lungs of, northern India. And well, it is an uphill task, but it has to be done, better late than never. Otherwise, these dramatic visuals will be synonymous with monsoons. The great Indian monsoon brings Uttarakhand and Himachal to a dripping halt year after year. But what have we learned from this? Nothing. Nothing at all. Numerous lives are lost, innumerable loss to life, property. Where does this all end? There has to be an end to all this, and perhaps, like I said, that it is time to have another Chipko Andolan and save what can be saved. Because for us, this is our home in the hills. It's not a tourist destination or a pilgrimage spot. We need to strike a balance between nature, between progress, development, and all this chaotic development where we see houses being washed away in rivers and spate. Their homes, their dreams, their people who have sunk in their life income. So we have to take care of what is left, and it has to be sooner than later. Yes, so thank you, Ms. Tanya, for sharing your insights, all the way from Mussoorie. And, it's terrible to see this situation. When I see these videos, everyone is at Himachal also. See the situation, it's terrible. Like, we have to do something. That's why we are today to show. Now we are showing you insights of Mussoorie, but now we are in Mumbai. So let's see what's happening about Mumbai. So let me invite you on Mr. Gopal Zaveri. He's a Mumbai's riverman activist since 2011, but architect by profession. But it really touches his heart to see what's happening day by day to the hills, to the rivers of Mumbai, and these floods we are seeing. And it really touches him. So let him share more insights. Let's get him online. So what's happening? Yes, good afternoon. Good afternoon. Thank you, Avinash. It was a great day, a Kargil Vijay Day. और हमने देखा कर्नल पुन्नी साहब को हमने सुना, और हर इंच माउंटेन के लिए कश्मीर में कारगिल के वक्त या सियाचिन के ऊपर हमारे लोग जिस हिसाब से एक एक इंच के लिए हमारी मिलिट्री वहां लड़ रही है, हर माउंटेन के लिए, हर माउंटेन का हर स्टोन के लिए। पर यहाँ पे जो कंडीशंस है, जो हमने उत्तराखंड में देखा या हिमाचल में देखा या गिरनार के नीचे जूनागढ़ में देखा, तो रिवर के बारे में लास्ट 12 साल में रिवर मार्च ने बहुत कुछ बोला है कि रिवर में क्या चाहिए, रिवर का रीजुनेशन के बारे में बात की है। पर आज कुछ अनप्लान्ड डेवलपमेंट और मुंबई की हिल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में सिचुएशन हमारा मुंबई आइलैंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी है, माया नगरी है, मैजिक सिटी है, ड्रीम सिटी है। पर इसके अंदर कुछ ऐसे माउंटेन्स है, ऐसी माउंटेन्स हिल्स है, छोटी छोटी हिल्स है, जिसके कारण ये नदियां मुंबई के अंदर बहती है। और ये जो नदियां है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। Avinash, please help me with a slide of Mithi River. अभी यहाँ पे जो ब्लू लाइन जो मैंने बताई हुई है, ये जो ब्लू लाइंस है, ये ब्लू लाइन जो एंटायरली है, ये मिठी रिवर है। आपको ऊपर का कॉर्नर में पवई का लेक दिख रहा होगा, एकदम एक्सट्रीम में ऊपर। पवई के आसपास विहार लेक है, विहार लेक में से ये मिठी रिवर आती है। पर ये मिठी रिवर के आसपास, मतलब अभी जहाँ पे कर्शर है वहां पे असलफास, पवई हिल है, उसके पीछे घाटकोपर हिल है, ये सारे का जो कैचमेंट एरिया है वो मिठी नदी है
और एक्सट्रीम लेफ्ट के स्क्रीन पे आपको मुंबई का एयरपोर्ट दिख रहा है, और वो एयरपोर्ट के सामने जितने भी रेड मार्क वाले पैचेस जो दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुंबई के स्लम्स है, जो कुर्ला के, असलफा के या वाकोला के, अंधेरी के जो अराउंड द एयरपोर्ट के जो स्लम्स है, ये स्लम्स के अंदर बेसिकली जो हिल्स है, ये हिल्स को कंप्लीटली कॉन्क्रीटाइज किया गया है। अभी जब ये हिल्स को कॉन्क्रीटिंग किया गया, उस पे झोपड़े बने, पाथवे को भी कॉन्क्रीटाइज किया गया, तो जब भी माउंटेन्स के ऊपर बारिश होती है और वो पानी जब नीचे आता था, तो पहले रुक रुक के आता था, क्योंकि माउंटेन्स पे ग्रीनरीज होती थी, रफ सरफेस एरियाज होता था, सॉइल होती थी जो पानी को होल्ड करती थी, बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे, और झरने धीरे धीरे से बहते हुए नीचे की तरफ नदियों की तरफ आते थे। अभी हमने क्या किया कि ये अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट में ये सारे के सारे माउंटेन से जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, वो नीचे नदी के तक पहुंचने से पहले पूरा एरिया को फ्लडेड करता है। और आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट का रनवे भी पिक्चर में नदी के ऊपर से बना हुआ है, और नदी एयरपोर्ट का रनवे के नीचे से जा रही है। मतलब हमने वहां तक, जहां तक इसको मोल्ड कर सकते थे, हमने डेवलपमेंट के लिए मोल्ड किया। अभी इसको कनेक्टेड जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, नालेज है, जो पहाड़ से नदी की तरफ बह रहे थे, वो सारे के सारे नाले को हमने सिंक कर दिया, क्योंकि उसकी आजू बाजू की जमीन हमें चाहिए थी। उसके ऊपर हट्स बना दिए, उसके ऊपर रोड्स बना दिए, उसके ऊपर बिल्डिंग्स कर दिए, और उस प्लानिंग के लिए हमने इनको भी डाइवर्ट कर दिया। और जैसे जैसे ये नालों को हमने डाइवर्ट किया, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल नहीं कर पाया एरिया, और पूरा एरिया फ्लडिंग होना चालू हुआ। तो अभी इसका क्या कर सकते? आज इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, क्योंकि असलफा से लेके आप पूरा एरिया देख रहे हो। मेरे जो स्लाइड है सामने, उसमें अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, मरोल, पवई, हीरानंदानी, घाटकोपर वेस्ट से लेके नीचे का जो क्रांति नगर के नीचे में वाकोला तक का जो पूरा एरिया है, एंटायर एरिया इज फुल ऑफ स्लम्स। तो 5.5 लाख स्लम्स तो खाली एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी पे है। असलफा हिल पे अलग है, पवई जागृति नील नगर की हिल इंक्रोच अलग से हो रही है। तो ये सारे को जब तक हम जीरो स्लम्स मुंबई की बात नहीं करेंगे, जब तक इनको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हाउसिंग की बात नहीं करेंगे, कैसे इनको घर दे सकते, क्योंकि राइट नाउ जो डेवलपमेंट चालू है, हमने भी अभी भी बात हो रही है कि धारावी का डेवलपमेंट करना है और इतने लाख फ्लैट बेच के धारावी को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बनाना। पर ये क्यों नहीं बोला जा रहा है कि धारावी का डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जो भी मिट्टी के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, उस एरिया में अगर सरप्लस हाउसिंग भी होते हैं, तो यहाँ का जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं, मिट्टी के आजू बाजू का या दूसरी नदी के आजू बाजू का, उसके ऊपर बात नहीं होके सिर्फ हम फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे तानिया जी ने बताया पूरा, कि जिस हालत जो उत्तराखंड की हुई है, जो हालत हिमाचल की हुई है, उससे भी खराब हालत। मतलब जैसे अभी अविनाश ने बोला कि कल मरोल में लैंडस्लाइड हुआ, इसके पहले हर साल 2 या 3 जगह पे लैंडस्लाइड के केसेस होते हैं। वो मलाड में हो गया, कुरार विलेज हो गया, या लास्ट ईयर नेहरू नगर नाला के आसपास, मिठीबाई कॉलेज के आसपास भी घर ढह गया था, स्लम्स ढह गए। तो ये ऐसी जगह पे ये जो हो रहा है, इसको रोकने का एक ही चीज प्लान है कि हमको रिवर रिज्यूनेट तो करना है, एरिया रिज्यूनेट करना है, पर इसके साथ साथ अगर मुंबई का फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम सोच रहे हैं, तो विदाउट रीडेवलपमेंट द स्लम्स रिहेबिलिटेशन और जीरो स्लम्स ऑफ मुंबई, इट इज नॉट पॉसिबल। One more slides, please, Avinash, share it. That is about the Oshivira River. Oshivira River is basically moving from Sanjay Gandhi National Park and going towards the Lokhandwala in Andheri West. Now you can see the entire river. The major patch is going through the RA in the green patch area. और ये river का जो ऊपर का जो hill है, ये पूरा जो हिल है, ये हिल बिल्डर्स लोगों ने इसको कंटिन्यूअसली इसका एनक्रोचमेंट किया है। दिस हिल इज द ओरिजिन ऑफ ओशिविरा रिवर। दे आर डाइवर्टिंग द हिल्स
कंस्ट्रक्शन के लिए। हम लोग वहां गए थे तो आज सिक्योरिटी लगा दी, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क का भी इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शंस नहीं, कहीं बार इसको बताया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट्री थी उसमें भी इस चीज की बात की गई थी 2011-12 में कि भाई ये हिल्स जो है इसको इस हिसाब से कैसे आप यूज कर रहे हो, इसको कैसे आप सेविंग कर डालते हो पूरा। और हमारे पास 2 साल पहले के से आज तक के वीडियोस है जिसमें इस हिल्स के ऊपर लेपर्ड्स है, डियर का मूवमेंट है और सबसे बड़ी बात है ओसिविरा का गौमुख है। तो ऐसी ब्यूटीफुल हिल जो है, अगर उसके आप डायरेक्शंस को चेंज करोगे झरने के या नालों को, नदी के, तो अल्टीमेटली जो कैचमेंट एरियाज है वो पूरा फ्लड हो जाएंगे। और दूसरी बात है, ओशिविरा नदी जो है वो और एक ट्रिब्यूटरी लाती है, जो ट्रिब्यूटरीज आती है जो इसमें नहीं दिख रही है, और वो ट्रिब्यूटरीज आती है आपका पूनम नगर से, जहाँ पे मजाज डेपो, और वो एसवी रोड पे जाके गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में मिलती है ओसिविरा जंक्शन से। उसके इतने नालों को मजाज डेपो के पीछे डाइवर्ट किया गया और 2005 के फ्लड के वक्त सारे डाइवर्ट नाले थे, उन्होंने लोगों की लाइफ ले ली। तो जितने भी इसके ट्रिब्यूटरीज है, नालेज है, जिसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, वो डाइवर्जन के लिए हम लोग जिम्मेदार है। और इसके कारण जो भी एक्सीडेंट होगा, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो, चाहे फ्लडिंग की वजह से हो, पर इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। मैं पोईसर रिवर में जाने से पहले अविनाश जी और अरुण जी गए थे पोईसर रिवर के ऊपर, और उस रिवर की कंडीशंस क्या है उसका एक डायरेक्ट लाइव बता रहे। तो अविनाश प्लीज। Yes, just 1 second. Yes. नमस्कार, मेरा नाम अरुणांशु है। मैं एक पत्रकार रहा जिंदगी में। मैं और परिवेश के ऊपर मेरा बहुत ही गहरा संबंध है परिवेश के साथ। मैं एक परिवेश सचेतक हूँ और लोगों को जागरूक करना पसंद करता हूँ। मैं एक परिवेश के लिए काम भी करता हूँ। तो आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो देखा है, ये दामू नगर है। कांदिवली ईस्ट में एक पोर्शन है जहाँ पे ये बस्ती बने हुए हैं। एक्चुअली ये संजय गांधी नेशनल पार्क को इलीगली एनक्रोच किए हुए हैं, और इसको एनक्रोच करने के बाद जो हुआ है, जो इस इलाके का जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक्चुअली ये दामू नगर के बीच में से आ रहा है ये पोईसर रिवर। ये पोईसर रिवर इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम संजय गांधी नेशनल पार्क, जहाँ पे मैं कल गया था। ये आपको दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल है। तो वहाँ से ये नदी निकल के जो है ये क्षेत्र से गुजर के अरब सागर में जाके मिलता है। लेकिन आज ये नदी एक्चुअली एक बस्ती के अंदर नाला बन के रह गया है, और बस्ती का जितने सारे सीवरेज कनेक्शन है वो पूरे ये पोईसर नदी के साथ जुड़ा गया है। इसलिए ये नदी आज के दिन में नाला हो गया है। सब लोग इसको नाला ही बोलते हैं, लेकिन मैं जब लोगों को बोलता हूँ जो भाई ये नाला नहीं है, ये एक नदी है। और 1955 में यहाँ पे दिलीप कुमार जी का एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म शूट किया गया था जिसका नाम है नया दौर, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर था। तो उस समय का जो सीरीनिटी था, यहाँ का जो परिवेश का जो बहुत ही सुंदर रूप था, वो आज हम लोगों को दिखाई नहीं देता है।
ये इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमन हैबिटेट जो सरकार, राजनीतिक नेता और कई सारे लालची लोग जो इसको एनकरेज कर रहे हैं, दिस इज द डेंजर फॉर आवर लाइफ, दिस इज द डेंजर फॉर आवर सोसाइटी. We will slowly lose this virginity of the nature and we will Yes. बेसिकली आपने वन एंड ऑफ पोइसर रिवर देखा, पर पोइसर रिवर का अगर पूरा प्लान देखेंगे तो पोइसर रिवर दो एंड से ओरिजिनेट होती है. ऐसे जैसे अरुण जी बता रहे थे, वन इज द दामोनगर के पीछे से और दूसरा है ये क्रांति नगर. यहाँ पे जो सर्कल बताया हुआ है क्रांति नगर का एक्सट्रीम राइट के एंड में, तो यहाँ से ये नदी निकलती है और नदी आप देख रहे हो कि जाते हुए जो ब्राउन कलर का है वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को क्रॉस करके जो व्हाइट डार्क लाइन है वो डार्क लाइन है वेस्टर्न रेलवे की जो ट्रैक्स है, और उसको क्रॉस करके अरबियन सी में जाने से पहले ये नदी पूरा एक बीच में आइलैंड भी बनाते हैं कांदीवली विलेज. So such a beautiful long Poisar river at present ये वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में आती है. अभी ये रिवर जो है जहाँ पे क्रांति नगर है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का एरिया है. ऊपर आप देख रहे हो कि पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क से ये नदी जो निकलती है, और जैसे ये नदी बाहर आती है, ये नदी की कंडीशन जो रेड लाइन में जो स्लम्स है वो आप देख सकते हो. ये आपके पूरे दामोनगर के रामगढ़ स्लम्स है, दूसरे जो स्लम्स है कांदीवली ईस्ट के और अपना महिंद्रा के बाजू में. जब रिवर हाईवे क्रॉस करती है तो आप देख रहे हो कि पूरा एक स्लम्स का पैच दिख रहा है, वो पोइसर का स्लम है. तो ये सारे स्लम्स का जितना भी सीवर है वो डायरेक्टली ये नदी में जा रहा है. खाली सीवर ही नहीं जा रहा है, जो डेब्रीज है उसको भी डाल के जाम कर देते, नदी को एनक्रोच कर लेते हैं, नदी के अंदर फर्नीचर भी छोड़ देते हैं. तो ये सारी कंडीशंस में आप देख रहे हो कि एरिया को पूरा कॉन्क्रीटाइज हुआ है. इंच टू इंच भी खाली दिख रहा है आपको, एक इंच खाली नहीं. कंप्लीट कैचमेंट एरिया की आप कंडीशन देखोगे तो दिस इज द कंडीशंस. नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस के अंदर रिवर को रिजुनेट भी कैसे किया जाए, बिकॉज ये पूरा स्लम का जितना भी सीवर है, जितना भी ग्रे वाटर है, वो नदी में आता है. इसको टैप कैसे करेंगे एसटीपी प्लांट के साथ, और किए तो कितना % होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है. पर दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो स्लम्स है, इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, ये एरिया को जब तक आप लाइफ में रिजुनेट नहीं करोगे, स्लम्स का रिजुनेशन नहीं करोगे, तो आपकी हिल का रिजुनेट नहीं होगा, आपके जंगलों का रिजुनेट नहीं होगा, आपके नदियों का रिजुनेट नहीं होगा. तो जैसे अरुण जी ने बताया कि नाले, अरुण जी नाले मुंबई की रेफरेंस से दे रहे थे, बट नाले बेसिकली कनेक्टिंग द माउंटेन्स एंड द रिवर. नाल मीन्स the purest form of life which is connecting the child and the mother, the embryal cord. तो वैसे ही नाला जो है which is the purest form of life which is connecting mountains and the river. तो यहाँ पे मुंबई में नाला मतलब गंदगी डालने की जगह, या something which is a place of dirt on your backyard. तो ये सारी situations में इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज थी, क्योंकि आप नीचे डाउन साइड पे देख रहे हो एक माउंटेन रेंज दिख रही है टुवर्ड्स रामगढ़ नगर लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ग्रीन पैच दिख रहा है पूरा. ये यहाँ पे क्वेरी चलती थी, और ये कांदीवली स्टोन जिससे आज वीटी स्टेशन बना हुआ है, वो स्टोन्स की क्वेरी थी. अभी ये माउंटेन आज भी है, इसके ऊपर नीचे की तरफ जितने भी स्लम्स है, ये माउंटेन को कहीं से भी काटा गया फॉर द स्टोन. और अल्टीमेटली अभी क्या हो रहा है कि माउंटेन्स के आसपास जितना भी एरिया है वो भी कॉन्क्रीटाइज हो गया.
तो पानी जो है नदी तक पहुंचने के पहले ही कैचमेंट एरिया को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। फिर जैसे स्टार्टिंग में अंधेरी सबवे की बात की या सेंट्रल सबवे हो या अदर लो लाइन एरियाज ऑफ मुंबई हो, जहां पे भी पानी भर रहा है उसके मेजर कारण है 100% कॉन्क्रीटाइज। उसके ऊपर से रिवर का जो बेड है उसको भी कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा है कि जो पानी को स्लोली स्लोली मैंग्रोव की तरफ जाने को देगा। तो आज सिर्फ हम नदी की बात नहीं कर रहे, हम आज माउंटेन्स और हिल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस था। हमने हर टाइगर हिल की बात की, हमने सियाचिन की पर्वतों की बात की, हिमालयस की बात की, हमने उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों की बात की। पर आज मुंबई के पहाड़ों की जो स्थिति है, पहाड़ दिखते ही नहीं। ये जो हिल्स है मुंबई की, हिल्स को अगर प्लान आउट भी करना है तो देयर इज अ साइंटिफिक वे। मलबार हिल भी प्लान आउट हुआ है, पाली हिल भी प्लान आउट हुआ है। ऐसे नहीं है कि हिल्स की प्लानिंग नहीं हुई है। तो असलफा हिल को क्यों नहीं किया जा रहा है, या घाटकोपर की हिल की क्यों ऐसी कंडीशंस है, या फिर पवई हिल्स की क्यों ऐसी कंडीशन। तो ये जो हिल्स है, ये हिल्स को अगर आपको रिजुनेट करना है, हमको रिजुनेट करना है, तो जीरो स्लम्स मुंबई, क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन नॉट गेट योर रिवर ब्लैक टिल द डेट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिविलाइजेशन, क्योंकि हम लोग मुंबई के अंदर है क्योंकि ये नदियां है। आज इंटरनेशनल मैंग्रोव कंजर्वेशन डे भी है, और मुंबई इज वन ऑफ द हैविंग अ ग्रेट मैंग्रोव रेंज। Our mangroves are as beautiful as the Sundarban of a UNESCO heritage of West Bengal. पर हमारे मैंग्रोव्स की जो कंडीशन है वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। द रीजन इज कि ये चारों नदियां जिस मैंग्रोव्स में खुलती है, दहीसर, पोईसर, ओसियरा और मिट्टी, ये गोराई में, चारकोप में, कांदीवली, अंधेरी, लोखंडवाला और माहिम में, ये मैंग्रोव्स में खुलती है। और ये मैंग्रोव्स में आज भी लेपर्ड्स घूमते हैं फ्रॉम द घोड़बंदर साइड, आज भी इसमें गोल्डन जैकल्स है, आज में फिशिंग कैट्स है। तो ये सारी मैंग्रोव्स को हमने बचाना है। तो आज एक और एग्जांपल मैंग्रोव्स का भी देता हूं। अविनाश, प्लीज हेल्प टू शेयर द स्लाइड ऑफ, यस, दिस इज द चारकोप, द टार्जन हिल, टार्जन लेक। आप ये देख रहे हो नीचे के जो हटमेंट्स है, हमारी महाड़ा ने खुद ने यहाँ ऐसे लो इनकम ग्रुप हाउसिंग बनाए थे, और उसके बाद यही मैंग्रोव्स के अंदर ये सब बिल्डिंग से बनने लगे। जो रेड पैच बता रहा हूं, ये रेड पैच को कोविड से पहले हम यहाँ जाते थे, ये पूरा पैच एनक्रोच हो गया है। अब आज टार्जन लेक की तरफ आज जा नहीं सकते। राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो वाटर बॉडीज दिख रही है पूरी, ये पूरा दहीसर रिवर का जो कनेक्टिविटी है अरबियन सी से, वो यही पॉइंट पे है। और ये हिल को चारों तरफ पानी है। अभी ये हिल में ऐसे ऐसे विजिटर्स, बर्ड्स आते हैं, ऐसे ऐसे रेप्टाइल्स है जो वर्ल्ड में बहुत जगह पे है भी। तो ये हिल को जो भी माइग्रेटेड बर्ड्स है, या इसमें टार्जन लेक है, वहां स्वीट वाटर है, और अदर वे राउंड वहां पे सॉल्ट वाटर है, और पूरा अराउंड आपको मैंग्रोव्स दिखेंगे, और मैंग्रोव्स के बीच में हिल है। यहाँ पे बर्ड्स की मौजूदगी इतनी है, अपार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड द गोल्डन जैकल्स। तो ये हिल को हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको बर्ड सेंचुरी बना देना चाहिए। पर बर्ड सेंचुरी और सब कुछ तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले इसका एंक्रोचमेंट हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो छोटी छोटी हिलें हैं वो मुंबई की बायोडाइवर्सिटीज है, मुंबई की लाइफ है, मुंबई की नदियों की लाइफलाइन है, और यही हमारा रिवर सिविलाइजेशन है। क्योंकि अगर रिवर नहीं होती तो मुंबई में सिविलाइजेशन नहीं होता, स्वीट वाटर नहीं होता, और विदाउट दिस हिल्स यू विल नॉट हैव अ ऑर्गेनाइज्ड रिवर्स टू गो टिल योर अरबियन सी। तो ये पूरा जो लैंडस्केप है मुंबई का, वो जिसको मर्जी है अपने नाले का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कोई भी बिल्डर अपना बिल्डिंग बना रहा है, नाला चेंज कर दे रहा है, कहीं से भी नाला, मतलब इट्स जस्ट कि भाई गंदा पानी निकलना चाहिए। बट द फैक्ट इज कि दिस नाला इज फॉर our lifeline, for our rivers, और without nalas this rivers are not possible, क्योंकि हर एक ड्रॉप
कैचमेंट एरिया में गिरता है वो नदी से पहुंचने से पहले नाले के अंदर से जाता है। और ये कैचमेंट एरियाज में कहाँ पे गिरता है, तो हिल्स पे गिरता है। हिल्स इसको राइट डायरेक्शंस देती है, राइट वे ऑफ स्लोप देती है, और ये पानी नदी तक पहुंचता है, नदी से समुद्र तक पहुंचता है। पर इसको बीच बीच में राइट जगह पे रोका गया तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करता है, क्योंकि हजारों बोरिंग जो मुंबई के हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो 26 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, हमारे नुकसान की बात कर रहे हैं, पर जो चिटले कमीशन 2006 की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन दिए गए उसमें से सबसे बड़ा था प्लास्टिक बैन। नहीं हुआ, आज तक प्लास्टिक बंदी नहीं ला पाए है कंप्लीटली इफेक्टिवली। इसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ तबेलाज इन मुंबई, क्योंकि जितने भी तबेलेज है उसका जो गोबर डिस्पोजल हो रहा है वो नाले और नदियों में हो रहा है। तो इसका जो हेल्थ इश्यूज है और बाकी के इश्यूज तो है ही, पर नदी को चौक कर रहा है, और ये चौकिंग के कारण भी मुंबई में ज्यादातर फ्लडिंग्स हुई। इसको छोड़ के शिफ्टिंग्स ऑफ नाला, तो ये जितनी भी ट्रिब्यूटरी शिफ्ट की है उसको इमीडिएटली रीअलाइन करना चाहिए, चिटले कमीशन बोलता है। एनक्रोचमेंट ऑफ हिल्स एंड द फॉरेस्ट, चिटले कमीशन रिपोर्ट क्लियरली बोलता है कि हिल्स एंड दिस फॉरेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, स्पेशली द हिल्स इन संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बताया कि कैसे दिंडो से हिल टोटली एनक्रोच हो रहा है, सरेआम एनक्रोच हो रहा है। अप्रैल मई में उसके जंगल जला दिए जाते हैं, तो ये लेपर्ड्स का जो लास्ट होम बचा हुआ है उसको भी पूरी खत्म कर। और फाइनली ये रिवर बिफोर गोइंग टू अरेबियन सी इट इज लैंडेड टू अ मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स का एंक्रोचमेंट तो हम सबको पता है, पर जो हिल्स भी है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये जो कंडीशंस है मुंबई की या एंटायर कोकन की, कोकन में भी हमने देखा कि किस हिसाब से लैंडस्लाइड्स हुई है और कैसे 25-26 जनों की जान गई है। और वैसे ही पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दहिसर ऑनवर्ड जो पानी का लॉगिंग हुआ है वो वैसे ही विरार तक, वो सारे जो वेटलैंड्स है उसको जो वैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सारी वेटलैंड को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है आप रिवर सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे। मेरा मानना ऐसा है कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो था, वो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को हम रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं, पर मोहनजोदड़ो का खत्म होना भी रिवर के कारण ही हुआ, क्योंकि बाद में आज जिसको हम मोहनजोदड़ो बोलते हैं, सिंधी में ये मुंजो मुर्दों के दाटने की जगह बन गई। तो ऐसा नहीं हो कि हम डेवलपमेंट के नाम पे और कंफर्ट लेवल के नाम पे सिर्फ ब्रिजेस, कनेक्टिविटी, चेंजिंग ऑफ नालास, encroaching the place of eco-sensitive areas, destructions of mangroves, and finally we ended Mumbai like one more a place of death like Mohenjo-daro. तो river civilization जो है वो बिना river के नहीं आ सकती, और इसको बचाना है तो हिल्स को बचाना है। और हम कदा ये नहीं कहते कि हिल्स पे से आप हट निकाल दो, हम ये कहते हैं कि हिल को रीऑर्गेनाइज करो, रीप्लांट करो, हिल्स को अपना ओपन एरिया। हर जगह का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता कंक्रीटाइजेशन। कंक्रीटाइजेशन मे बी नीडेड, वी आर नॉट डिनाइंग, बट नॉट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, नॉट ऑन द साइड ऑफ द रिवर, नॉट इन द ट्रिब्यूटरीज, नॉट ऑन द हिल्स। तो इसको कैसे डेवलप करना है। एंड लास्ट वी टॉक्स अबाउट द मुंबई फ्लडिंग, रोड सब भर गए। कोई भी सिटी को इस हिसाब से डेवलप होने चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इस रोड एक्ट एज अ रिवर। तो ये रोड को रिवर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, राइट वे से स्लोप, राइट वे से स्टॉर्म ड्रेन वाटर का नाला और नदियों के साथ में कनेक्शन, रिवर्स बनाने के लिए, क्योंकि जब भी मुंबई वेस्टर्न घाट में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेनफॉल एरिया है, तो कहीं के भी और क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस है, तो उस वक्त पे कहाँ पे पानी होल्ड करना पड़ेगा, किस हिसाब से पानी को होल्ड करने पड़ेगा। तो वो होल्ड, अगर पानी रोड पे होल्ड होता है तो किसी के घर में, दुकानों में या फैक्ट्रीज में नहीं जाएगा। और हम लोग आइलैंड सिटी पे है, तो पानी जो समुद्र में निकलने से पहले कहाँ पे होल्ड हो सकता है, तो रोड्स आर द बेस्ट प्लेस। पर उसके लिए हमारे स्टॉर्म ड्रेन वाटर्स, हमारी सीवर लाइंस के ढक्कने, गटर के ढक्कने वो राइट वे से बंद होने चाहिए,
कि जिसके कारण एक्सीडेंट्स नहीं हो, क्योंकि हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे उसके स्लोप, उसकी कंटेंट्स, तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखे बिना हम अगर मुंबई को प्लान कर रहे हैं तो वे विल एंड इन सम बैड सिचुएशन इन next few years. Otherwise, the thing will be in the worst. There's nothing more to say. There's a lot of things we said in last 12 years from the Mumbai March and River March to all of you. The way you people can help us, support us on social media at least, it will be the great help to the Mumbai, because otherwise the Mumbai environment will be finished on the name of the development. और ये development है या destructions hai. This is the worst thing we are facing. So now the things is, Yes. yes, Avinash. Yes, बहुत कुछ हो रहा है. I guess बहुत हालत खराब है, but बहुत conditions मुंबई की, we are still same condition even after floods. So hopefully people will listen and people will share. Even your one like, one share today can do a lot. So today we spoke about hills, we talk about rivers, we talk about mangroves as Mangrove Conservation Day. So let's try and conserve the mangroves, and let's try and conserve the hills, and let's try to rejuvenate the rivers, and also stop unorganized housing happening in Bombay. Let's try to reorganize. There's a solution everywhere, and let's try and do it. Jai Hind, Jai Maharashtra.